Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है. दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय आईईपीएफए, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर. सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार. बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे. छोटे कभी लंबे बाल ये बना लें, जो टीवी पे देखे सब खरीद डालें. तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं. फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा. लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो. सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें. कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं. देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे. आईईपीएफ अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ. इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर. भारतीय शेयर बाजारों सेंसेक्स निफ्टी की बात करेंगे और इन बातों की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट विशाल दहिया मौजूद. विशाल, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत. धन्यवाद हर्ष. थैंक यू अर्जुन. Now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Sensex rises 376 points to close at 72,427. Nifty gains 130 points to settle at 22,041. Economic nationalism is quintessentially fundamental to our economic growth, says Vice President Shri Jagdeep Dhankar. And Brent crude is trading at $82.03 per barrel in global crude market. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 376 अंक बढ़कर 72,427 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 130 अंक की उछाल के साथ 22,041 पर पहुंचा. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक राष्ट्रीयता सबसे बेहतर मौलिक जरूरत. और ब्रेंट क्रूड की कीमतें प्रति बैरल $82.03 पर चल रही हैं. यह सप्ताह बाजार का आज आखिरी दिन था शुक्रवार को, और 0.5% की बढ़त दर्ज की गई है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 376 अंक बढ़ा है, 72,427 पर रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 130 अंक मजबूत होकर 22,041 पर रहा है. विस्तारित बाजार की बात करेंगे. बीएसई मिड कैप 0.78% मजबूत हुआ, जबकि स्मॉल कैप में 0.68% की बढ़त रही है. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 22 कंपनियों के शेयर आज बढ़े हैं, जबकि 8 कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही है. The key domestic stock market indices ended more than 0.5% up today amid positive cues from the global share markets. BSE Sensex gained 376 points, 0.52% to close at 72,427. NSE Nifty rose 130 points, 0.59% to settle at 22,041. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index gained 0.78%, while the small-cap index rose 0.68%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 22 companies appreciated, while those of 8 companies declined.
Wipro jumped to 4.79% and Mahindra & Mahindra climbed 4%. Larsen & Toubro gained 2.68% and Maruti rose 2.52%. On the other hand, Power Grid declined 2.36%, SBI fell 0.90% and Reliance slipped 0.70%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 sectors registered gains while 4 witnessed losses. The auto sector gained 2.17% and realty rose 1.53%. Consumer discretionary advanced 1.48% and capital goods 1.38%. On the other side, utilities lost 0.8%, oil and gas slipped 0.7% and power sector slipped 0.57%. The overall market breadth was positive with shares of 2,194 companies appreciated while those of 1,659 companies declined. A total of 82 companies remained unchanged. And now let's have a look at the performance of the rupee. Harsh. रुपया अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 2 पैसे इसकी कीमत रही है। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 104.39 पर कारोबार कर रहा था। और थोड़ी सी अर्जुन सेंसेक्स और निफ्टी की बात करेंगे। विशाल 0.5% का आज मार्केट में उछाल रहा है। हम देखें कि पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो कभी थोड़ा करेक्शन, कभी थोड़ी सी बढ़त, इस बीच में मार्केट चल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें एक सस्टेन्ड ग्रोथ दे रहा है। बिल्कुल हर्ष, देखिए अगर इस हफ्ते के सेंटीमेंट की बात करें मार्केट की तरफ तो सीधे तौर पर जो मोटा एक आभास मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि उछाल है, बढ़त है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। और लगातार चौथे दिन ये बढ़त जारी रहना अपने आप में एक महत्वपूर्ण रहेगा, और ख़ासतौर पे इसलिए क्योंकि आज आखिरी दिन था इस हफ्ते का। तो अब अगले हफ्ते की शुरुआत मार्केट जो है कैसे करेगी वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन थोड़ा सा नज़रिया अगर बढ़ा कर देखें, थोड़ा सा सिनेरियो को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके देखें तो जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, उन पे भी नज़र थोड़ी सी दौड़ाई जाए तो लगभग वैसा ही हाल वहाँ पे है। और ग्लोबल क्यूज़ लग रहा है कि उसका असर भारत की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन पर देखने को मिला। और केवल यहाँ 4 दिन बढ़ोतरी नहीं रही, मोटे तौर पर मैं अगर नज़र डालूं बाहर जो ग्लोबल मार्केट्स में हाल रहा, हांगकांग में लगातार तीसरे सेशन पे बढ़त रही। जापान का जो निके है वो उसने एक बार फिर से 34 साल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है शुक्रवार के दिन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एशियन मार्केट और ग्लोबल क्यूज हैं वो भी इंडियन मार्केट पर थोड़ा बहुत असर डाल रही हैं, लेकिन साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी लगातार मार्केट में दिलचस्पी बनाए हुए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं की है, खरीदारी जारी है। 140 करोड़ की आबादी पर हम बैठे हैं। पिछले 2-3 साल का हम ट्रेंड देखें, खास करके कोविड के बाद का, तो बहुत सारे लोगों ने छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में एंट्री ली है, जिसकी वजह से एफआईआईज के निकलने के बावजूद अर्जुन अगर हम बात करें मार्केट पे भारत के बहुत असर नहीं पड़ा है। और ख़ास तौर पर एक लगातार जो ट्रेजेक्ट्री है इसकी वो बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये एक बबल की तरह है और इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है? Vishal, just to add a metric to this, so today DIIs were the net buyers to the tune of 2,277 crore rupees and FIIs were the net sellers to the tune of 3,064 crore rupees. Well, there lies the answer, Arjun, because you know what Harsh was also pointing out. The FIIs were net sellers, DIIs were net buyers as well. But the difference between this amount may be small, but it's substantial from the point of view of the fact which Harsh was pointing out specifically, that is there enough stability in the Indian economic growth story when we are talking about, and there seems to be that stability, because this is not the only occasion. In the past also, when we dwell deeper into the numbers of the market, we will clearly find out that these kind of situations have been earlier as well, wherein FIIs have been net sellers, and this difference between the FIIs selling and DIIs buying is larger in the previous scenarios as well. But despite the fact there is a buoyancy in the market, and it doesn't look like, as Harsh was referring to, it doesn't look like that this will end up being a bubble, because the fundamentals are strong, the cues are very strong, the policy mechanism seems to be very strong, the messaging which is coming in from the policy makers is also very strong, although there is an election season ahead as well, and we might see some sort of correction somewhere, but then ultimately that is how the market operates. So one of the ways of measuring consumption in the economy, which is also part of computing GDP, is
how the manufacturing sector is performing, and mobile manufacturing is a very important component of that sector itself. So auto actually went up by 2.17%. What are the sales numbers telling you, and what does this mean for profitability of these companies? See, manufacturing is a very key component of the overall Indian economy framework. It is not only standing on infra. It is not only standing on services or agriculture. Manufacturing has a very significant and very equivalent stake. And one very important parameter or the metrics which you were referring to is the sales. Now the sales numbers, and if you start from the festive season onwards, last year, that is in 2023, continuing up till now, doesn't look like that there is a low down or a low point for specifically the auto industry. That is why this buoyancy which we see today also in the stock market. And I would also like to add here, it's not just about manufacturing. Look at other sectors as well. In today's scenario, it was IT and pharma also, the indices which went up very clearly. So it's an overall scenario. It is not dependent upon the Indian economic growth story, is not dependent upon just one sector or two sectors. It's an entire holistic framework which is pulling along with each other, and that is backed by a strong policy structured mechanism as well. Decisions being taken, reform measures which were announced way back, say a few years back, perhaps are now starting to show results, and there are more in the pipeline as well. We're heading for a short break, so please stay tuned on Market Mantra. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका मार्केट मंत्रा में स्वागत है और हम बात कर रहे थे भारतीय बाजारों की, सेंसेक्स निफ्टी की। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट विशाल बता रहे थे, अगर हम प्रमुख एशियाई बाजारों पर भी नजर डालें तो उसमें आज बढ़त बनी हुई है। हांगकांग के हैंगसेंग में लगभग 2.5% की मजबूती आई है, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स 1.4% की बढ़त पर रहा है। दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में भी 1.32% की बढ़त रही। जापान का निकेई सूचकांक 0.86% बढ़ा है। छुट्टी की वजह से आज वैसे चीन का शंघाई बाजार बंद था। यूरोपीय बाजारों में इस समय कारोबार चल रहा है, दिन है वहां पर। लंदन के फुटसी 100 में 1% की बढ़त है, जबकि जर्मनी के डैक्स में 0.8% की तेजी बनी हुई है। फ्रांस के कैक में भी 0.5% से ज्यादा की तेजी बनी हुई है। और विशाल, जैसा कि आप इसी को रेफर कर रहे थे कि जो ग्लोबल क्यूज हैं, पूरी दुनिया के जो बाजार हैं, उसमें एक तेजी बनी हुई है, जिसका थोड़ा सा एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर दिख रहा है। लेकिन अगर कंपैरिजन चार्ट के आधार पर भी देखें रेस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड एशियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट, तो भारत की जो कहानी है वो बहुत अलग है। क्योंकि जो ग्रोथ हम देख रहे हैं यहाँ के मार्केट में इन्वेस्टर्स का और एफआईआईज का, वो दुनिया के अभी किसी बाजार में नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। भारत की कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि भारत के जो आर्थिक ढांचा है, उसकी जो नींव है वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन आपने कंपैरेटिव एनालिसिस की बात कही। अब हम अगर कंपैरिजन करके देखें मोटे तौर पे, तो केवल मार्केट टू मार्केट कंपैरिजन किया जाए तो जापान के निकेई को देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और लगातार टूटता जा रहा है वो रिकॉर्ड। तो ये दर्शाता है कि जो बाकी एशियन मार्केट्स हैं उनमें भी उतनी ही मजबूती देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में। और एक तरह से कहा जाए कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टाइप दिख सकता है। हालांकि ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होती है, क्योंकि क्यूज मिलते हैं, दोनों तरफ से मिलते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मानी जाती है। तो सीधे तौर पर जैसे हम ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं अपनी मार्केट के लिए, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो एशियन मार्केट्स हैं, जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, अब वो भी जब ग्लोबल क्यूज की बात करती होंगी तो भारतीय मार्केट्स की बात करती होंगी। Bank of Japan has been quite contrarian while other central banks have raised the discount rate, or the repo rate as we call it. They have been running the stimulus program non-stop. What is the cue that we can take from
the Japanese approach to the stock market, because the beneficiary is clearly asset prices going up and they maintain their stock market capitalization. Well, Arjun, here I would say, when we're talking about the central bank approach and be it Japanese approach or be it the US Fed's approach, or we're talking about the Royal Bank in UK also, taking cue from the US Fed as well. Comparatively, what Reserve Bank of India, the state, our central bank, the stand which is taken, I would say this is more centered not toward the stock market. This is more centered towards the overall economic framework. What the stock market does is it takes cues from there as well, and it's just not the only cue. This is just one of the cues there. Of course, Japan has taken Japan's central bank has taken a contrarian view. It seems it has worked really well in their favor, and that seemingly somebody in the US or somebody in the UK would call it a very bold move, because they're not in a position right now to go ahead and take that bold move. Also, looks like if this also has to be juxtaposed with the fact that the factual inflation figures also, these are almost out of control when we look at some European countries and specifically United States. What about China? How do you see their economy post-COVID? Because my co-anchor mentioned about COVID's impact is still something that one can feel globally and including in India as well. How would you rate China's economy right now? They've had some problems, especially with the building projects and not handing over property, projects being left incomplete. How is the central bank reacting to all this right now? Well, if you want a one sentence answer, then it would be that, they have been tying themselves in knots for almost quite a few years now, and it looks like it has become a hangman's noose now. On all sides, be it the domestic economic scenario, be it the international investments as well, doesn't look like anything is going in favor for them. Specifically, the bubble, the real estate bubble which burst out there. That is a humongous crisis which they're yet to deal with. Then the infra projects as well. They've been pumping money into the infra projects, specifically the international infra projects. BRI, Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiatives. But it has not delivered, the kind of results perhaps with which, they wanted those results to be delivered. And now that India has come up with this idea of an economic corridor of their own, which involves the UAE and others as well. Prime Minister was there the other day in UAE. So that makes things a little bit more difficult for our neighbors. And before we take our next story, let's have a look at a second headline story on Market Mantra. Addressing the Bharat Startup and MSME Summit at Dr. Ambedkar International Center in New Delhi today, the Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, drew attention of trade and industry bodies to the ill effects of not subscribing to economic nationalism. Terming economic nationalism as quintessentially fundamental to our economic growth, the Vice President called for importing only that which is unavoidably essential to prevent the drain of India's foreign exchange, loss of employment opportunities for citizens, and impediments in growth of entrepreneurship. Highlighting the need to be vocal for local, the Vice President said that this spirit was a facet of Atmanirbhar Bharat and reflected the essence of the Swadeshi Andolan during India's freedom struggle. He lauded the effective performance of India's MSME sector and noted that it was bringing about transformational change in Tier 2 and Tier 3 cities and in villages. How important is this announcement? It seems to be a very fully loaded story. Atmanirbhar, maintaining imports at a minimum only of what is essential, absolutely essential, so that our export figures improve, GDP goes up. How would you read into this in the context of MSME? See, Arjun, this is the next logical step into this entire story when we were talking about the self-reliant India campaign, Atmanirbhar Bharat, then vocal for local. It all comes down and boils down to economic nationalism, because ultimately, what do you do when you are vocal for local? You manufacture domestically so that you meet the consumption demand, domestic consumption demand as well. And domestic consumption demand partly or majorly in some sectors, in some areas, is also met by import. So you want to deal with that so that the money doesn't go out. It has a dual effect as well. One is, if you import from other countries, you're spending money for that. And also, you're not generating any jobs. But if you manufacture the same items here, one, you generate jobs. Two, you have the money circulating in your own economy itself. And there is this circle of supply and demand is closed within the domestic
framework and domestic structure itself. That is what the vice president was emphasizing upon, because that's what the idea seems to be. And when we look outward, yes, there was a globalization era, few decades ago, but all major economies seems to be, deploying this tactic now. Specifically, and this becomes a problem for specifically for those where the consumption market is not large. In our case, that's not the issue. Ours is a huge consumption market. Of course, all big economies or all manufacturers, global manufacturers would want to take advantage of that. Why shouldn't we take advantage of it ourselves? We have another metric. PMI for December when it comes to manufacturing is 54.9, which is quite high, anything above 50. And even that, according to a comparative figure month-on-month basis, because that's ISM releases it accordingly, is actually slowed down. Do you expect PMI to go up? Very briefly. It would. We do expect it to go up because it will ultimately have to meet up those demands which are there in the market as well. और ये जो राष्ट्रीय आर्थिक राष्ट्रवाद की बात में जो अभी आप बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे थे, बिल्कुल अगर आप ये देखें जनवरी का, मेरे पास अभी मैं फिगर चेक कर रहा था, जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा लगातार नैरो हो रहा है, खास करके जनवरी का जो फिगर है दिसंबर के मुकाबले काफ़ी नैरो डाउन हुआ है, यानी कि जो एक्सपोर्ट है हम बढ़ा रहे हैं और जो इंपोर्ट है वो हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं. लेकिन विशाल जी, आपसे मेरा सवाल बस यहाँ ये है कि जहाँ हम आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें देश में उत्पन्न करना चाहिए, लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, देश में बने सामान खरीदें. लेकिन जब साथ ही हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो अक्सर इकोनॉमिस्ट इस थ्योरी पे आते हैं कि जब भी आप आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे और ग्लोबलाइजेशन दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे क्योंकि दोनों का जो बेसिक प्रेमाइस है, जो बेसिक थ्योरी है, वो बिल्कुल एक दूसरे के अलग है. और अगर मैं संक्षिप्त में इसे समझाना चाहूं तो मैं आपको केवल इतना ही कहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन एक और आर्थिक राष्ट्रवाद एक दूसरे के विपरीत जरूर चलेंगे, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते हैं. दोनों को साथ लेके भी चला जा सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की जो थ्योरी है वो सिंपली ये कहती है कि भाई आप बाहर की मार्केट्स के साथ जो है तालमेल बना के रखिए, अपना फायदा भी देखिए. और आर्थिक राष्ट्रवाद भी यही कहता है कि आप अपना फायदा देखिए. पहले आप, जैसे कि मैं अर्जुन जी को पहले कह रहा था कि अगर वो हम अपने देश में ही बना सकते हैं तो वो हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं. We'll be heading for a short break once again, so please stay tuned on Market Mantra. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है. एनपीएस जरूरी है. Welcome back to Market Mantra. In more news, this time from the US stock market, all three major US stock market indices ended higher yesterday. The Dow Jones Industrial Average gained 0.91%, S&P 500 rose 0.58%, and the Nasdaq Composite Index added 0.30%. Vishal, the stock market indices are going up, asset prices are going up. You have yields from Treasury bonds issued by the US government. That has gone up. That's become more valuable as well. And now you're finding the US dollar index also creeping up to almost 105. Now it's 104.28. What's your take on the US economy with its budget deficit? Well, the budget deficit in the US economy is humongous. They have been trying to manage it for quite some time now. They have had setbacks as well. Now, it is going to be really interesting to see from here onwards as to how the federal government in the United States tackle the budget deficit. That is one part. Two, how the federal government and the federal bank both look at the inflation figures as well. As I was saying earlier, it is really important for the US economy because it's not looking good on the set of it. Third and most important part is, as I was saying, it's not a consumer-based economy. It's the inversely proportional part. So whatever they do, they will have to sell outside, and they will have to gain money on that as well. Keeping that apart, this is going to be really interesting. How dollar performs on international at international level, because there has been pushback in the wake of the Russia-Ukraine war as well. There has been pushback from other larger economies like Russia. China has also jumped in terms of doing away with the dollar as an international currency. So that is another trouble which is brewing for them. So it's their hands, as far as the economists in US are concerned and economic policy makers in US are concerned, their hands seemingly and their plate seemingly is really full right now.
Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices fell today in intraday trade. Brent crude was trading 1% lower at $82.03 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading down 0.86% at $77.36 per barrel when reports last came in. The oil market has been become very complicated, especially with Iran being allowed to sell oil and then sanctions being lifted and trying to reimpose sanctions. This geopolitics right now, what's happening in the Middle East, and plus US now becoming the world's largest, one of the largest suppliers of crude oil along with OPEC nations like Saudi Arabia. What is the impact on oil prices? Can we rely on the data being given right now, or should we go long term in terms of our purchase agreements? Well, the solution lies in both long term and a short term policy, something which India has been deploying for the past year and a half since that conflict started between Russia and Ukraine. And there were sanctions being imposed left, right, and center everywhere. So India had a very pragmatic approach. For the short term, we will fulfill our needs with whatever we have on the plate, and for the long term we are going to engage with the oil producing countries, something, and very positively, something which we have been doing. जी, और तेल के बाद सोने और चांदी की भी बात कर लेते हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने में तेजी रही है. अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने की कीमतें 95 रुपए की बढ़त के साथ 61,717 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हैं. चांदी के मार्च कॉन्ट्रैक्ट की कीमतें 265 रुपए की बढ़त के साथ 71,385 रुपया प्रति किलो पर हैं. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें $2,019.10 प्रति ऑन्स हो गई हैं, जबकि चांदी प्रति ऑन्स $23.08 पे चल रही है. और आज के लिए मार्केट मंत्रा में. But before we do that, let's ask about the future of, because the futures prices are indicating high. What is your take on, should we invest in precious metals? Very briefly. Well, this is like sticking your neck out, but if you have the stomach to take the risk, yes, please go ahead. Well, before we close, a reminder of the headlines now. Sensex rises 376 points to close at 72,427. Nifty gains 130 points to settle at 22,041. Economic nationalism is quintessentially fundamental to our economic growth, says Vice President Shri Jagdeep Dhankar. And Brent crude oil is trading at $82.03 per barrel in the global crude market. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 376 अंक बढ़ा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 130 अंक की उछाल. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक राष्ट्रीयता सबसे बेहतर मौलिक जरूरत. और ब्रेंट क्रूड की कीमतें प्रति बैरल $82.03 पर चल रही हैं. आज के मार्केट मंत्रा में इतना ही. विशाल आपाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. मार्केट मंत्रा की पूरी टीम के साथ नमस्कार. नमस्कार. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार. बादशाह शहनशाह चुलबुल या पी के रोज नए अवतार में दिखे. छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले. तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं. फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा. लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो. सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें. कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं. देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे. IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी. आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है. This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस. अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है. Market